500 बीपीएल के लिए क्या 3500 रिक्वायरमेंट है? BPL requires there is survey of my lord 2002 आपसे 2003 जो पूछ रहे हैं वो बताइए, डोंट ट्राई टू मिसलीड दी कोर्ट। my lord। बीपीएल के लिए क्या वार्षिक आय होना चाहिए किसी व्यक्ति की? मतलब बीपीएल के लिए तो ये मापदंड है कि आपका सर्वे होगा 14 अंक अगर आपने पा लिया उससे ऊपर तो आप मैंने एपीएल आपसे में सवाल क्या पूछा वकील साहब? my lord। उसमें आय का क्या क्राइटेरिया है? तो सबमिशन किस तारीख को था? उस समय इनका बीपीएल कार्ड वैलिड बीपीएल कार्ड वैलिड होने से नहीं होता है, उनका पति जो है नियुक्ति पा चुका था। इट वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द बीपीएल कार्ड कैंसल्ड, कमिश्नर हैज ओनली ऑन दैट बेसिस दे आर बट कमिश्नर में से एनीथिंग। मैडम आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। वेयर इज अ कंपेरेटिव टेबल जिसमें कि आपने मार्क्स दिए होंगे ना अभ्यर्थियों को, इसी के क्यों नहीं भेजा था पहले रिकॉर्ड? क्यों नहीं लेकर भेजा था रिकॉर्ड आपने? रिटर्न फाइल हो गया था। रिटर्न और रिकॉर्ड में फर्क समझते नहीं समझते? किस पद पर हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। आपको रिकॉर्ड और रिटर्न में फर्क मालूम है नहीं मालूम है? रिकॉर्ड के लिए आज सूचना किसने सूचना आपको पहले नहीं मिली थी क्या? आज के लिए थी तो आज के लिए थी? ये सर 7/2/24 को आपको सूचना नहीं मिली क्या? जी क्या हो गया? The respondent number 5 will appear through VC, Your Lordship, Sri Himanshu Shukla. हाँ क्या हो गया उनको? Will appear through VC, my lord. रिकॉर्ड आ गया इसमें? my lord non compliance of last order my lord called twice हाँ हाँ रिकॉर्ड आ गया नहीं आया? yeah क्या है? क्यों नहीं भेजा था पहले रिकॉर्ड? क्यों नहीं लेकर भेजा था रिकॉर्ड आपने? सर रिटर्न फाइल हो गया था। रिटर्न और रिकॉर्ड में फर्क समझते नहीं समझते? किस पद पर हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। आपको रिकॉर्ड और रिटर्न में फर्क मालूम है नहीं मालूम है? रिकॉर्ड के लिए आज सूचना किसने सूचना आपको पहले नहीं मिली थी क्या? आज के लिए थी तो आज के लिए थी? ये सर 7/2/24 को आपको सूचना नहीं मिली क्या? सर उस टाइम पे मैं आपकी ओर से कोई अपीयर ही नहीं हुआ, हमने तो अवेलेबल वारंट निकाले थे नहीं सर मैं उस 7/2 को। टाइम पे मेडिकल लीव में था मैं चलिए ठीक है, रिकॉर्ड दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए, मेरिट्स पे बात करेंगे। ये सर क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? जी सर Lordship. हाँ क्या इशू पर आपका रिजेक्ट किया गया? Lordship, on the 2 points are involved in this case, Lordship. Respondent number was 5, was given appointment on the ground that she is below poverty line. The point 1. And on the merit also, on the basis of 12th mark sheet, she was allotted 10 points extra. There is impugn order is Lordship annexer A8 by the commissioner. P8 Of Lordship. After appointment of respondent number 5, Lordship, the petitioner challenged the same in appeal before the collector's CD, Lordship. एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर, हाँ फिर क्या हुआ? Lordship, and collector CD, Lordship, by the order annexer A5 जी allowed the appeal of the petitioner ऑन द ग्राउंड। on the ground, Lordship, that it wrongly the numbers were given to the respondent number 5 for being below the poverty line. अच्छा क्या लिखा है? Relevant lines are, Lordship, at page 17 in the order of the collector, Lordship. पढ़िएगा प्लीज। Lordship. उत्तरवादी रिस्पोंडेंट नंबर 5 के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन के लिए आवेदन पत्र दिनांक 10/8/2009 को प्रस्तुत किया गया है। संलग्न अभिलेखों से यह पाया गया कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी के आदेश क्रमांक 100 डेटेड 28/2/2009 से संविदा अधीक्षक पद पर दिनांक 28/2/2009 से 27/2/2014 तक उत्तरवादी के पति श्री संजय सिंह चौहान, फादर ऑफ सो एंड सो, अमरपुर को आदिवासी प्री में बालक छात्रावास पूर्णी विकासखंड कुसमी में पदस्थ किया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि आवेदन दिनांक 10/8/2009 को उत्तरवादी के पति की पदस्थापना संविदा अधीक्षक पद पर हो गई थी, जिससे श्री संजय सिंह चौहान को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की श्रेणी में आवेदन अवधि में नहीं माना जा सकता है। श्री संजय सिंह पिता सूरभान सिंह के नाम जारी राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की कुल संख्या एवं परिवार में सम्मिलित सदस्यों के विवरण में काट पीट कर कुल संख्या व नाम अंकित कर संशोधन किया जाना पाया जाता है। Then Lordship, in next para, Lordship, para number 6, on the merit also same was considered by the collector. बताइएगा। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंकों का निर्धारण करने पर
अपीलार्थी श्रीमती बबीता सिंह को पिटिशनर लॉर्डशिप कक्षा 12वीं में पूर्णांक 500 में 315 अंक यानी 63% अंक प्राप्त होने से 36 अंक, स्नातक के 10 अंक, इस प्रकार कुल 46 अंक एवं उत्तरवादी श्रीमती लता सिंह को कक्षा 12वीं में पूर्णांक 500 में 273 अंक यानी 54% अंक प्राप्त होने से 32 अंक प्राप्त होते हैं। अन्य अभ्यर्थियों को इससे कम अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी श्रीमती बबीता सिंह को उत्तरवादी ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाइए। ये राइट फ्लैग लगी बगता और कौन सा वाला फ्लैग? राइट फ्लैग लगी सर। प्राइवेट रेस्टोरेंट एंड पुलिस अरे कंपैरेटिव चार्ट कहाँ है मार्क्स का? से पीछे लगा सर। जी ये तो आपने कहाँ का चार्ट लिया है? साधना केवट, संजू देवी, उषा सिंह, सरोज कुशवाहा, कौन सा चार्ट लगा दिया आपने? ये पूनम सिंह, रंजना सिंह, गुड्डी सुमन, बबीता सिंह, लॉर्ड लता सिंह। चलिए कहाँ चार्ट कहाँ बनाया है कंपैरेटिव मार्क्स का? पीछे लगा लेफ्ट फ्लैग लगा। हम लगाई देखे तो ये। मैडम आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। वेयर इज अ कंपैरेटिव टेबल जिसमें कि आपने मार्क्स दिए होंगे ना अभ्यर्थियों को, इसी के नीचे बबीता सिंह एंड लता सिंह 12वीं इतना 36.5, लता सिंह 42.3, इसमें बीपीएल के 10 अंक जोड़ दिए गए हैं, लॉर्ड जबकि इनके पति ऑलरेडी जो है वहां पर काम कर रहे थे। तो फिर कैसे हो जाएगा? बताइए हिमांशु जी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन मालूम एट द टाइम ऑफ सबमिशन किस तारीख को था? उस समय इनका बीपीएल कार्ड वैलिड था। बीपीएल कार्ड वैलिड होने से नहीं होता, उनका पति जो है नियुक्ति पा चुका था। इट वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द बीपीएल कार्ड कैंसल्ड। Commissioner has only on that basis they are बट finding. कमिश्नर में से एनीथिंग और मैं this court is not required. The only issue is that what was the date to file the application? अगस्त 2000। कब की डेट थी? अगस्त 10/8/2009 10/8/2009 और इनके पति की नियुक्ति फरवरी 2009 में हो चुकी थी। लॉर्ड बताइएगा हिमांशु जी। My lords, only 2 months prior to the disappointment process, he was appointed in the post, and that was contractual employment, and his salary was only 3,500, my lord. 3500 बीपीएल के लिए क्या 3500 रिक्वायरमेंट है? बीपीएल BPL requires, there is survey of, my lord, 2002, आपसे जो 2003, पूछ रहे हैं वो बताइए। डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। my lord. बीपीएल के लिए क्या वार्षिक आय होना चाहिए किसी व्यक्ति की? मतलब बीपीएल के लिए तो ये मापदंड है कि आपके सर्वे होगा 14 अंक अगर आपने पा लिया उससे ऊपर तो आप मैंने एपीएल आपसे में सवाल क्या पूछा वकील साहब? मतलब उसमें आय का क्या क्राइटेरिया है? आय का क्राइटेरिया है, अगर आपकी 5,000 से ज्यादा कुछ आय है तो आपको 4 अंक दे दिए जाते हैं। 5,000 इस तरह- से 5,000 रुपए प्रति माह से? हाँ, ऐसा कुछ है कि उसमें अंक मतलब कुछ व्हाट लिखा आई क्यों वांट टू होता है? सबमिट कि अगर आपके पास एसी, कूलर, फ्रिज, आप किस कपड़े विभाग से हैं मैडम? हाँ आप किस विभाग से? इधर बीपीएल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? 5,000 साल 5,000 सालाना से कम आमदनी होना चाहिए। आपके पति को 3,500 रुपए प्रति माह मिल रहा था। अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही लगाया है पिटिशनर ने। ठीक है चलिएगा। एंड माय लॉर्ड, व्हाट आई वांट टू सबमिट कि 2 माह पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ। तो क्या हो गया? फरवरी 2 माह पूर्व होता है, 6 माह पूर्व होता है। फरवरी का अपॉइंटमेंट है आपका और ये आवेदन भरा गया है अगस्त 2009 में। मतलब व्हाट आई वांट टू सबमिट कि on the date of this appointment process, this family was not
above the poverty line. Because for This case becoming is filed above by poverty the- line, some time is needed to be there. That नहीं, he ऐसा has, नहीं होता है. and my lord, what other thing The is petitioner that being my aggrieved BPL of is the intact. Even petitioner has filed the objection before the Tehsildar. Annexure A8 passed by the Commissioner Rewa Division Rewa, whereby the appeal filed by the private respondent against the orders of the collector has been allowed by the additional commissioner Rewa. On the ground that on the date of the appointment, the BPL card issued in favor of the private respondent and her family was yet not cancelled, and therefore she was entitled to 10 marks for the BPL category. Next para. Brief facts of the present case are that applications were invited for appointment to the post of Anganwadi Karyakarta. Lordship. Anganwadi Karyakarta for the village Gram Panchayat Amarpur, Lordship. district Rewa, CD, Lord. district CD, CD, Lord. full stop. The applications were called in August 2009. Next para. Petitioner and the private respondent both were candidates to the said selection. Next para. Petitioner was given petitioner had secured 36.5 marks, which were higher than whereas private respondent Lata Singh had secured 42.3 marks. These 42.3 marks included 10 marks for her belonging to BPL category. Next case. Next para. Petitioner's contention is that Collector CD noted this fact that petitioner's husband, respondent's husband Sanjay Singh Chauhan was given appointment in February 2009 on 28 फरवरी 2009 in the as a contract superintendent of Adivasi Pre-Matric Balak Chhatravas Podi. Full stop. Admittedly, he was drawing salary to the tune of rupees 3,500 per month. Full stop. Therefore, on the date of making an application, private respondent Lata Singh could not have been considered to be a candidate under the BPL category, and when this objection was raised before the collector CD, he allowed the appeal filed by the present petitioner and had set aside the orders of appointment of Srimati Lata Singh, wife of Sanjay Singh Chauhan. Next para. Shri Shukla, appearing for the private respondent in his turn, submits that since BPL card was not cancelled and petitioner and the private respondent was still under the BPL category and the appointment was made just 2 months prior to the date of filing of the application, and that was not sufficient for upgradation to the non-BPL category, Commissioner has rightly allowed the appeal filed by the private respondent, and that does not call for interference. Next para. My lord, may I? Here, My lord, there was objection at the appointment process by the petitioner, and it was decided by the expert committee during the appointment process. That my it is also submitted by Shri Shukla, Himanshu Shukla, that objections raised by the petitioner were decided by an expert committee. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Lata Singh was given 10 marks for BPL category. Full stop. There is no dispute nor any documentary evidence produced by Shri Himanshu Shukla for the private respondent that her husband Sanjay Singh Chauhan was not given appointment as contractual superintendent for the tribal pre-matric Balak Chhatravas Podi on 28/2/2009. Full stop. It is admitted by Shri Shukla that his contractual pay was rupees 3,500 per month. Full stop.
officer appearing from the Women and Child Development Department, namely आपका शुभ नाम बताइए, मैडम का शुभ नाम है, Miss Ansuya Vajpayee submits that BPL के लिए that the requirement for a person to continue under BPL category is that his income should be less than 20,000 per annum. Full stop. Looking to the fact that petitioner, private respondent's husband was appointed on contractual basis and was drawing salary of rupees 3,500, had moved out of the category of BPL by virtue of his such appointment, and accordingly the award of 10 marks to Lata Singh cannot be given a seal of approval. Full stop. Therefore, when 10 marks are reduced, then her total score will come out to 32.3, which is less than the score made secured by Babita Singh, petitioner, which was 36.5. However, it is evident from the list that there is another candidate, namely Srimati Sunita Gupta, who had secured 42.7 marks, which are above that of the petitioner and the private respondent. Therefore, looking to the fact that Srimati Sunita Gupta had secured higher marks than the petitioner and the private respondent, she will be entitled to be given appointment being the highest scorer, and in fact her score was higher than. इनको क्यों नहीं दिया गया था appointment? हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। अच्छा, जी। तो भी तो उसके 10 नंबर ज्यादा थे ना? नहीं, वो फिर कम हो जाएंगे 10। अच्छा, कम हो जाएंगी 10 जी, नंबर। ग्रेजुएशन का क्या लिखा? ये हटाइएगा। क्या लिखा? सुनीता गुप्ता was given 10 marks though her graduation was not complete. Therefore, when those 10 marks are reduced, then her score will come to 32.7. Thus, petitioner being most meritorious and having secured the highest marks 36.5, she is entitled to be given appointment as Anganwadi Karyakarta. Therefore, the order of the Commissioner, Rewa Division, Rewa, is hereby set aside. It is directed that appointment orders be issued in favor of the petitioner within 15 days of receipt of certified copy. Petition is allowed and disposed of. फाइल ही होगा। Right.